गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो दिखाए। तो जो राजम जी जैसे गुरु के पास जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो सच में भाग्यशाली इंसान। Many of our students have marched ahead in the territory of inventions in the field of music, and we would like to present before you an eminent musician, her senior-most student, Dr.V.Balaji. May I request Dr. Balaji to please come on stage? Dr. Balaji is ex-head of the department in the violin department of BHU. He took his initial training under his grandfather, late V.N. Krishna Iyengar, and his father, late V.K. Rajam. He studied under Dr.Rajam ji the techniques of playing North Indian music. He has won a number of prestigious awards, some of them being Navrasa Sangeet Vachaspati, Sangeet Sri Rajam Ratnam, Sangeet Bhushanam. Dr. Balaji has invented violin with 11, 15, 25 and 30 strings, and today on 75th birthday, Dr. Rajam ji's 75th birthday, he has named it Rajam Bela. So I invite Dr. Balaji to speak about his invention, and I also invite his son, Sri Anantaraman, to give a demonstration of this unusual instrument, violin. नमस्कार। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, इतना जरूर कहूँगा कि वायलिन के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं जिसके रिसर्च में I have tried my level best to do something more to prove the violin is from our India. Actually, the name also, violin is not, actually this is also a part of Sanskrit, Vayu Linam. Vedaha Vedam Purusham Mahantam Aditya means in the between these two lines, the swaras as well as the intervals, whatever goes in the Vedas, it is mentioned, this is called Vayu Linam. So while I was trying, so one instrument recently I made with the help of cello, viola, combinedly violin, which is named by my teacher, अब मेरे गुरु जी के नाम को मैं dedicate करके समर्पित किया हूँ, that is Rajam Bela, in which you can play like a sarod, like a rabab, and flute, and sarangi, also violin. So this is viola body. This is all viola and violin. This is the cello portion, and this is the cello bridge. No rabab. So कहने का तात्पर्य यह है कि वीणा का ही एक अंग है जो पहले से ही यहाँ मौजूद था, जिसमें हम लोग सब बजा सकते थे. So now my son will play. Today I am going to play Rag Kedar.
मैं जिसका परिचय कराने जा रही हूँ वह एक बहुआयामी व्यक्तित्व है. A motivational speaker, a composer, a visionary educationist, an entrepreneur, a professor, and a violinist par excellence. परंतु आज के दिन इन सबसे पहले उनकी एक अलग पहचान है. She is the thought in her dream, vision in her eyes, sound in her ears. She is the pride of a mother. Dr.Rajam ji's daughter, Dr.Sangeeta Shankar. Like mother, like daughter, Sangeeta ji started performing when she was 8 and gave her first solo performance when she was 18. She has numerous albums to her credit, along with a Grammy nomination. I'm sure not many people know this. She is the founder and director of Legendary Legacy Promotions Private Limited, which consists of a storehouse of excellent classical music. Professor at Whistling Woods International Film Institute, she educates the future filmmakers in Indian music and voice culture. A visionary educationist, she believes in educating the masses and drawing them to the rich heritage of classical music. She has done a path-breaking work of producing 11 DVDs imparting education to children to create culturally, morally, and musically educated society. May I invite Dr. Sangeeta Shankar to talk about her endeavour and to show us small portion of her DVDs. हम सभी कलाकार गाते बजाते हैं, दुनिया घूमते हैं और फिर शायद कभी ये भी कहते हैं कि पहले जैसा नहीं है. तो हमारे मन में ये आया कि ऐसा क्यों है, और फिर मन में ये आया कि शायद इसलिए ऐसा है कि हमारे बच्चों को आजकल वो एक्सपोजर नहीं है जो हमें बचपन में था. तो फिर हमें लगा कि इसके लिए कुछ तो करना चाहिए, बच्चों को एजुकेट करना चाहिए. अगर बच्चों को इस हमारे संगीत और कल्चर का एजुकेशन हो तो ज़रूर वो बड़े हो कि वही इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देम, दैट इज़ व्हाट बिकम्स देयर लाइफ, देयर होम. एंड इसी दृष्टि में हमने सोचा कि हम कलाकारों का ज़रूर ये फ़र्ज़ बनता है कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम हमारी विद्या बाँटें, न सिर्फ कलाकार बनने के लिए लेकिन अच्छे श्रोता बनने के लिए भी. और संगीत जिसकी जहन में आ जाए वो आदमी अंदर से बहुत ही शांत मिजाज और खुश रहते हैं. तो उस दृष्टि में एक प्रयास है, प्रयास के कुछ नमूने आज प्रस्तुत हैं और प्रयास जारी है. थैंक यू. हमारा देश, हमारा भारत देश, इसकी आत्मा में संस्कृति बसी है. इसकी मिट्टी के कण कण में कला का सृजन है और इसके हवा पानी में संगीत गूंजता है. शंकर भंडार डोले मस्तक पर चंद्र शोभे अंग नमो भस्म राग नंदी गण संगडोले. जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, पहली बात तो ये है कि एक टाइप का नहीं है, दो टाइप के हैं. ओके. अब नॉर्थ इंडियन को हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं हम, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, और साउथ इंडियन कर्नाटक सिस्टम. रामुनि सन्निधि सेवय सुखमा अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरा आत्मन सुख पायो री, अलबेला सजन आयो री. हर राग का एक फ्रेमवर्क रहता है जो बेसिक रूल्स बोलते हैं. जैसे हम लोग ABCD सीखते हैं, फिर BAT बैट सीखते हैं, फिर CAT कैट सीखते हैं. तो थोड़े थोड़े करके हम अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से फिर सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस के बाद फिर हम लोग पैराग्राफ्स बनाते हैं. तो ऐसे तरीके से राग का भी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है
वो पहला बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है सरगम। सजन बिना बावरी बैरी कहूँ कैसे आवा माए, सजन बिना बावरी बैरी। एक राग दीपक होता है और सुना है कि जब उसको गाया जाता है तो आंधियों में भी चिराग जल उठते हैं। दीपक कथन करता, दीपक कथन करता। सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, पूड़ी और कचौड़ी, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, हलवा ला दे दे। योग की तरह लय की साधना है और ईश्वर की प्राप्ति भी है। सुर से ज्यादा यूनिवर्सल बीट है। ये पलक का झपकना, ये हृदय का स्पंदन, ये नाड़ी का धड़कना, ये सब प्रकृति की ही अपनी एक ताल है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीट की पुनरावृत्ति ही, उसका रेपिटेशन ही बीट बनेगा। मैंने कहा हा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहा हा, 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 हा। ये मैंने बचपन में एक, हम लोग बैठे हुए थे स्टूडेंट, तो हमने हंसी राग बनाया था। हा, 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 ताल और राग तो दोनों ही हैं, बहुत सारे राग हैं, लेकिन तालों के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि 360 अलग अलग ताल हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में पाए जाते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में तो इतना कुछ है कि आप जितना डूबेंगे उतना ही पाएंगे। So I invite you to check it out, see for yourself, and discover the joys of Indian classical music. से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां अपना रखी हैं, उसी तरह से अपनी मिट्टी और अपनी मिट्टी की खुशबू, अपनी ओरिजिनलिटी से जुड़ा ये कार्यक्रम भी आप उतनी ही तन्मय और साधना के साथ देखें। हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने भारतीय संगीत के बारे में सिखाएं, बताएं, अनुभव करने का प्रयास करवाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन इस रैट रेस के अंदर, इस तेजी से दौड़ती हुई दुनिया के अंदर हमारे बच्चे बाहर की चीज तो अपना लें, परंतु अपने घरों की दीवारें ठीक न कराएं। पर आज जिस वजह से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमसे रहा नहीं गया कि डॉक्टर राजम जी के बारे में कुछ झलकियाँ आपके सामने पेश की जाएं। तो एक एवी डॉक्यूमेंट्री के द्वारा कुछ झलकियाँ आपके सामने पेश करते हैं। One of the finest and outstanding artists in the field of music, violin virtuoso Padmabhushan Dr. N.Rajam needs no introduction. She is the living legend whose name is synonymous with the violin. Not many would know that this great personality had a very humble beginning. She was born into a traditional family of musicians to her parents Vidwan Sri A. Narayana Iyer and Srimati Amini Amal.
Her father, Vidwan Sri A. Narayana Iyer, a veena and violin player, was a great visionary. He believed in teaching music early. Dr. Rajam's formal training on the violin began at the tender age of 3. Rigorous practice and sheer dedication made her blossom into a young prodigy. After her maiden solo performance in All India Radio at the age of 9, she started performing as a full-fledged artist all over the country. Her father then put her under the tutelage of Vidwan Sri Musiri Subramania Iyer, a doyen of his time, from whom she learnt the finer nuances of Carnatic music. By the time Rajam was 14, she was accompanying Srimati M.S. Subbalakshmi in her concerts all over India. This was the time a major change was to happen, a change that would transform the history of violin in the world. Destiny brought to Rajam's way some musical records of Sangeet Martan Pandit Omkarnath Thakur. She was mesmerized by his great music, and with her father, set out to meet this great master to learn from him. He happily accepted her and brought her to Benares, the holy city and seat of music. She completed her higher education at the Benares Hindu University with gold medals in bachelor's and master's, and also a PhD in music. Even though Dr. Rajam had the best violin technique available in the South, that technique was inadequate to reproduce the music of Pandit Omkarnath Thakur. She had to undertake extensive research. With the help and guidance of her father and unending, passionate efforts, she finally found out a revolutionary technique which could reproduce the Gayaki Ang on the violin. ऐसा नॉर्थ इंडियन म्यूजिक किसी ने अगर वायलिन में बजाया, मेल फीमेल दोनों, तो डॉक्टर राजम है. खूबसूरत बोइंग और टोनल क्वालिटी वाह. वो जैसे गायकी अंग बजाती है, कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं बजाता वैसा. इतना सुंदर बजाती है. Dr. Rajam got married to Sri T.S. Subramaniam, a chartered accountant by profession, who wholeheartedly supported as well as appreciated her music, and later they gave birth to their daughter, Sangeeta. The whole family of 3 traveled together across the globe for concerts. Dr. Rajam's concerts all around the world are known for her perfection, impeccable adherence to classical purity,
and precision of notes, crystal clarity of tones, superb bowing, melodious and aesthetic improvisations, creating a sublime atmosphere for her audience. Adorned with many awards, including the Padma Shri, Padmabhushan, and the Sangeet Natak Academy Fellowship, she has dedicated her life to music. Kashi Hindu Vishwavidyalaya became her karma kshetra. She joined the Department of Music as a lecturer and went on to become a professor and dean. Till this date, she continues to be an emeritus professor at the BHU, a status given to a chosen few. इतनी बड़ी पोस्ट में रहने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि वायलिन छोड़ दिया, अब तो क्या है हम तो बहुत बड़े हैं, ना। वायलिन इनका हमेशा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते गया। अच्छा, एक बात है, इनको सिखाने का बहुत अच्छा शौक़ है, और शौक़ ही नहीं है, सिखाती भी बहुत अच्छी है। इनके शिष्य लोग भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। Her prime success is her illustrious daughter, Dr.Sangeeta Shankar, who has been performing across the globe. She is not only an exemplary musician, but also an entrepreneur and visionary educationist. Dr.Rajam has imparted music education in the Gayaki Ang technique to many aspiring students around the world, who are continuing the tradition and carrying it forward. Today, she leads a simple life, serving the cause of music, teaching enthusiastic and dedicated full-time students at the Gangubai Hangal Gurukul at Hubli, Karnataka. Dr. Rajam found a worthy son-in-law in Shankar Devraj, a chemical engineer, ghazal singer, and businessman who totally supported her endeavor in taking the legacy forward through her daughter, Dr.Sangeeta Shankar, and granddaughters Ragini and Nandini Shankar. ये चमत्कार ये है कि अपने सामने देख लिया कि भी 1, 2, 3 पीढ़ियाँ बजा रही है। मेरे ख्याल में वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि चौथी पीढ़ी भी उनके सामने बजाने लग जाए। ऐसी शख्सियत में उनके बारे में क्या कुछ सूरज को दिया, ऐसा लोग कहते हैं कि सूरज को क्या दिया देखा जाए। उनका संगीत वाकई इतना तप्त है, इतना ऊर्जावान है कि वो बस वो तो वही है और कोई है ही नहीं उनके जवाब में। एक महान कलाकार तो दीदी हैं ही, उसके बारे में कुछ कहने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक उसके साथ में
इतना एक महान व्यक्तिमत्व मुझे अनुभव करने को मिला कि बहुत चीज़ें उनसे सीखने को मिली है इस दौरान। जिस तरह से आपने 75 इयर्स गुजारे हैं आपकी लाइफ के, बहुत आनंद में और बहुत म्यूज़िकली फुलफिलिंग, उसी तरह से आपकी उम्र बहुत लंबी रहे, बहुत हेल्दी रहे, बहुत म्यूज़िकली सेटिस्फाइड रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैं आदरणीय राजम जी को उनका जो 75th बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से और पूरे थाने शहर वासियों की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। राजम आंटी, आपको आपकी 75वीं सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि खूब वो बजाएं और दुनिया को अपना जो आने वाला रूप है वो भी दिखाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला रूप इनका बहुत बहुत बड़ा होगा और सरकार को उन्हें बहुत जल्दी पद्म भूषण पे नहीं, ये तो और आगे जाना चाहिए। वो तो मेरे ख्याल में कि शी डिज़र्व्स भारत रत्न।